can see my slide. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Uh, Okay. this topic that was suggested by again somebody. So uh, it's important to understand. Pehli cheez, I expect that all of you are able to forward me the topics that you feel you are interested in, the topics that are probably not covered in routine in your wards, because most of the time you people are from academic institutions, and I assume that your academic supervisors do teach you something. रब्बा मेरे हाल दा महरम तू अंदरों भी तू बाहर भी तू रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना सब कुछ मेरा तू कहे हुसैन फ़कीर न माना मैं ना ही सब तू सो हम अपने ज़ात की नफ़ी करके मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन स्लैश डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पे चलते. I was just thinking when I was trying to prepare this presentation that when I want to say about the management of conversion. Previously, it was called hysteria, hysterical reaction, hysterical dissociation, and there were many other names given historically to this problem as well. But later on, gradually, the name kept on modifying over the period of years. Like when I started my training, the management was absolutely different from the way we treat it now. And that is difference. I remember my supervisor back in 1992, so some 30, 40 years ago, he was asking me a question. And there was very famous study that came out back in probably 70s by Slater. Historically, that study is the only study which shows the comorbidities in that time with hysteria. And he mentioned in his paper that 80%, he was a neurologist, and this study was conducted in a neurology ward. So that was one tilt and one bias as well. So there is a confounding variable that these patients were taken from a neurology ward. And in his study, he proved that 80% of the people who were presenting with conversion disorders ultimately ended up having a neurological diagnosis, and these people have poor prognosis. So that was back in 70s. Now, historically, just imagine 30 years back when I was trained, this was the state of affairs that most of the time the conversion patients were actually seen by the neurologist. Now we know the background that it has to be seen by a psychiatrist. And then at that time, the treatment strategy was mostly aversive treatment. So, a punishment or aversive treatment methodologies were given to these people who were having conversion disorders. This was, again, I was talking about 30 years ago. And now we understand that the aversive treatment and treatment which is painful to the patient can actually complicate the situation. So just try to explain you that why it is different is हमारे पीरों फकीरों और बाकी जगहों पे जो इलाज होते हैं जैसे ऐसे खवातीन मोस्टली पीरों के पास लेके जाई जाती हैं और पीर वहाँ पे डंडे से झाड़ू से जूते से और इस तरह से इलाज करते हैं. I have witnessed one young girl who was actually burned by somebody to treat the conversion disorder or hysterical disorders. So that aversive treatment was in practice in psychiatry earlier in 30, 40, 50 years ago. Now the psychiatrists changed their treatment strategy because of the science. Things were changing, evolving, understanding was improving, so the management changed. But our peer fakirs and other people who want to treat the psychiatric patients, they still do treat them with this kind of management strategy. Aversive, painful punishment strategy to treat conversion disorders. So things do change. We should accept the change. We should modify, improve, and enhance our treatment strategies to make sure that the outcome of psychiatric morbidity is actually good. And if you won't do that, then of course things will be complicated. So coming back historically,
ICD-11 has given a conversion disorder or dissociative disorders. Now, both the things, conversion, dissociation, I was always confused about it because in West, these disorders are very rare now. So in past 7 years, since the time I am working in Canada, seeing multiple patients, maybe hundreds and hundreds of them, I have seen only two patients having conversion disorder, whereas I still perceive that most of the patients admitted in the psychiatric ward in Pakistan, at least 30% of them do have conversion symptoms. Correct me if I'm wrong. 30% means one third of your ward patients in outpatient or inpatients, they do comprise of conversion patients in the female population, not male, of course. So it's a high percentage. And in West, it's been gone. It's not there. Two patients that I saw were Asian in origin. One was from, again, Chinese background, and the other one was from Indian background. So the conversion in Western world is almost not seen. And this was the statement that I gave almost 20 years ago in Pakistan as well, when I published my first paper on conversion disorders, probably 20, 25 years ago, uh, regarding the comorbidities in psychiatric morbidities in conversion disorder. And we found a very high prevalence of psychiatric morbidity. If you have the opportunity, please do go through that small research paper published in Journal of College of Physicians and Surgeons about 20 years ago. You won't be able be having any difficulty in retrieving it. The conversion disorder in ICD-11 is labeled at 6B60. So this is the code 6B60. 6B60 is actually dissociative neurological symptom disorder. 6B60. If it is giving a code of 6B601, then it is with auditory disturbance. It's with 0 with visual disturbance, with 2 with vertigo or dizziness, code 6B60.3 sensory disturbances, 4 seizures, 5 speech disturbances, 6 paresis, 7 gait, 8 movement disturbances, 9 with cognitive symptoms, 6B60Y is with other symptoms specified, or 6B60Z is other unspecified symptoms. It never ends up here. So it continues with 6B61 as dissociative amnesia, 6B606B 6B62 is trance disorder, 6B63 is possession trance disorder, 61 is amnesia, 2 is trance, 3 is possession, 4 is identity, 5 is partial dissociative identity disorder, and 6 is depersonalization, derealization, and then unspecified and specified. So the classification is absolutely etiological based. Whatever the symptoms you are seeing, the presentation, you give the classification number according to that. So if somebody says to me that this patient is suffering according to ICD-11 in exam situation, of course, from 6B60.5, I will definitely say that this person is having dissociative disorder with speech problems associated with it. So this is now currently in practice. Dissociative disorders are characterized by involuntary disruption or discontinuity in normal integration of one or more of the following: identity, sensation, perception, affects, thoughts, memory, control over bodily movements, behavior. Disruption or discontinuity may be complete, but is more commonly partial and can vary from day to day, even from hour to hour. The type of the things that I will be talking today, probably I am not sure if you people would be able to hear it,
but this may be a longer presentation and we may have to split it into two, but I will try to cover it as much as possible. Now, conversion disorder, according to DSM-5, says one or more symptoms of altered voluntary, motor, or sensory function. Now, I am quoting DSM-5 not because I want to quote it like this, but because I want you to understand the difference. Clinical findings provide evidence of incompatibility. Symptom deficit is not better explained by medical condition, and symptom deficit can cause significant social and occupational decline. Conversion disorder, which is given a name of functional neurological symptom disorder about 5 years ago, not now. Now it's neurological symptom disorder. Functional neurological symptom disorder was a name given about 5 years ago. So as I mentioned, there is a huge evolution in even the naming of the disorder, which presents like this. So as I mentioned to you about ICD-11, in ICD-11, it's dissociative neurological symptom disorder. Dissociative neurological symptom disorder. But previously, in DSM and other literature, you were able to find the name functional neurological symptom disorder. I know it's very confusing, and it's been confusing for me for years as well, why they keep on changing the name for this. I will come to that point as well. It's a somatic psychiatric disorders, involves neurological type of symptoms affecting movement or sensation that cannot be explained by neurological disorders, non-epileptic seizure, limb paralysis, more common in females. Now, here, because I picked up this slide from somewhere, they say rare, more common in females. In Pakistan, it's not rare. The prevalence is still very high. And involuntary, not an issue of malingering. Now we don't use the word of malingering in ICD-11 as well. So what happens? Let's go over this. Are the neurological symptoms, for example, motor weakness, sensory loss, blindness, speech abnormalities, tremors, inconsistent with the pattern of known disease and not explainable by neurological or medical conditions? So most of the symptoms the patient is presenting that I have mentioned in ICD-11, they are actually not, first you have to rule out, not because of organic brain disease like brain tumor, multiple sclerosis, myasthenia gravis, polio, stroke, dementia, neuropathies, Guillain-Barré syndrome, lupus, spinal cord injuries, or drug intoxication. So these 7 or 8 things needs to be ruled out when you are questioning a person from conversion disorder, or taking the, not questioning, actually taking the history from a patient suffering from conversion disorder. You have to make sure that you rule out brain tumor, multiple sclerosis, myasthenia gravis, polio, stroke, neuropathies, Guillain-Barré syndrome, lupus, spinal cord injuries, and drug intoxication. Remember, this is the differential diagnosis, organic differential diagnosis of conversion or dissociative disorders as well. So how we have to rule it out? Brain tumor, we should have a scan or neurological examination. Multiple sclerosis, the symptomatology should be correlating with MS, and also investigations, appropriate investigations like urine and blood test to rule out the multiple sclerosis. Myasthenia gravis, which is considered to be about 0.9% in general population, but still you have to rule that out. Polio is common in Pakistan. Stroke, dementia, neuropathies, Guillain-Barré syndrome, ascending paralysis is Guillain-Barré syndrome. Lupus, where there are skin abnormalities, rashes, systemic changes, etc. Spinal cord injuries, and drug intoxication. Now, once you rule out these organic symptoms, then the next step is, are any of these factors present? Social factors. 1, low socio-economic background. So it is usually not seen in upper middle class or upper class. Lives in a rural area. Now, this boundary is vague now. So most of the people who are coming in from the, again, low socio-economic background in the urban communities
in bigger cities are also part of this phenomenon. So rural is not essential now. Low educational level. So it is said that most of these people have low educational background. Why is that? Over the period of years, lots of research have been conducted and say when people are educated, literacy rate matters a lot. So if the literacy rate of any place is more than 80 to 90%, this problem goes down. Like if you talk about West, literacy rate is high, conversion disorder is not usually seen. In East, the literacy rate is low, so these problems are seen. Anybody knows about the literacy rate of Pakistan currently? Well, as far as I know, about 8 years ago, 9 years ago, I don't know the recent figures, but it was 54%. Now, in 54% of the literacy rate that is given in Pakistan, it's not for the people who are actually educated. It's given for the people who can write and read their names and put a signature. Now, if that is the standard of literacy rate, of course, it is not an exact figure. So, हमें थोड़ा सा उस पे ध्यान रखना है. Lives in a developing nation or a region, cultural issues and background. These are the social factors. Now, psychological factors, stress, poor coping skills, internal psychological conflicts. Then biological factors, female gender, young age, impaired cerebral hemisphere communications, excessive cortical arousal. These are biological factors. Comorbidities, mood disorders, GAD, phobias, OCD, PTSD, dissociation, schizophrenia, personality disorders. Then symptoms are relatively high. Now, most of the time, the triggering event is either abuse or trauma. The trauma can be psychological, physical, or again, social as well. So these days, if the rate of the dollar has gone up from 100 to 300, of course, that is psychological trauma as well for some of the people if you don't realize. But of course, the people who are coming from low socioeconomic background are not actually considering the rate of the dollar. They are considering the oil prices on the streets, the food prices on the street. So things are, perception is different. So the presentation is different as well. PTSD or dissociation. Then perpetuating factors are accumulation of life stresses, like suppression of expression of distress. मैं परेशान हूँ, हूँ, लेकिन मैं बयान नहीं कर पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे, किसी से इजहार नहीं कर पा रहे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं. Impaired emotional processing, right? So this is the key in PTSD. The emotional and memory cognitive processing is actually having a gaps. This is actually the biological theory of PTSD as well. Somebody's asking question? Okay. We don't, according to ICD-11, we should not use the word malingering. That was the question in the chat box. I will come to that if I'll have time. Why? Minimization of the psychological factors and external locus of control. So whatever I am doing, locus of control, my emotional process control, my cognitive process control, my general day-to-day life control is with somebody else, not with me. कीमतें बढ़ रही हैं, मुश्किल पड़ रही है, चीज़ों को संभालना है, कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया. घर में एक डोमिनेंट हस्बैंड है, हर काम अपनी मर्जी से करवाता है, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया. इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, इसकी डिटेल्स हैं. लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है और उसको कैसे परसीव किया जाता है. ऑब्वियसली द साइकोलॉजिस्ट नो मच बेटर देन व्हाट आई एम टेलिंग यू, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? एंड दिस थ्योरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. Internal locus of control and external locus of control. Risk factors, family and socio-cultural factors, cognitive impairments, genetic, neurochemical,
hormonal factors. And then psychiatric comorbidity is another big factor. And I gave this slide earlier as well. These sometimes O-form disorders, somatoform and psychoform disorders, are unfortunately complicating. So polysomatoform, neuroform, nociform, polypsychoform, these are some of the disorders. And nociform disorders are actually dissociative, and neuroform disorders are conversion. Now, the difference is nociform is basically depersonalization, derealization, identity fugue, or psychosomatic amnesia. And in neurological or peripheral is conversion. I will come to this detail again. Any questions so far? No. Okay. I will keep on writing. If you have a question, either raise your hand or put it in the chat box. ये एक छोटा सा शेर, वो बिछड़ा तो फिर कभी सुबह ना हुई, रात ही होती गई हर रात के बाद. So unfortunately, in dissociative and conversion disorders, people do see darkness. So it is always a night, never a daylight. The brightness, the Sir, happiness, the comfort goes away. G. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. मेलिंगरिंग की जो हम बात कर रहे थे वो ICD 11 में मतलब जो मेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है उसमें नहीं है, वो किसी और चैप्टर में उन्होंने रखा है. लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स और मेलिंगरिंग ओवरलैप कर सकते हैं? इस पे कमेंट करें प्लीज. ओवरलैप बिल्कुल कर सकते हैं. मिलिंगरिंग हमने साइकाइट्री से हटा दी. उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, और उसकी रीजंस ये हैं कि हम अगर उस पर फोकस करना शुरू कर दें तो मोस्ट ऑफ द फिजिशियंस वो कहते हैं, जैसे आमतौर पे हमारे पेशेंट्स के साथ होता है कि जब वो पेशेंट्स इमरजेंसी में जाते हैं तो फिजिशियन क्या कहता है उसको देख के, वो इसको कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ. राइट. ये स्टेटमेंट कि इसको कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ, उस पेशेंट के लिए कितनी ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है कि वो हेल्प सीकिंग बिहेवियर के साथ प्रेजेंट कर रही है, और उसको हेल्प सीकिंग बिहेवियर के अवज में जो बात स्टेटमेंट दी जा रही है वो ये कि इसको कुछ नहीं है, इसको घर ले जाए, या उसको नींद की गोली दे के घर भेज दिया जाता है. इवन आज सुबह भी मुझे एक पाकिस्तान से मेरे किसी वाकिफ का मैसेज आया, और उन्होंने कहा जी मैं इमरजेंसी गया और मुझे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, घबराहट हो रही थी, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, नींद की गोली खाओ और जाओ, चले जाओ घर. सो यू सी कितनी एसोसिएट हो जाएगी स्टिग्मा, कितना एसोसिएट हो जाएगा एक प्रॉब्लम इस लेबलिंग के साथ. इसलिए मेलिंगरिंग को साइकाइट्रिक और मेंटल डिसऑर्डर में से हटा दिया गया ताकि लेबलाइजेशन खत्म कर दी जाए. मेलिंगरिंग अभी भी है, जाहिर है. मेलिंगरिंग में ये है कि आप जानबूझ के कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहे हैं टू गेन समथिंग, लाइक कैदी अपनी छुट्टी में कमी करने के लिए, या रिहाई के पीरियड में कम करने के लिए, या अस्पताल में दाखिल होने के लिए मेलिंगरिंग करते हैं. सिम्टम्स अपने पेश करते हैं ऐसे कि वो सिम्टम्स फिजिकल बीमारी के तौर पे पेश हों ताकि उनको एडवांटेजेस मिल जाएं. ऑब्वियसली मेलिंगरिंग एग्जिस्ट, बट साइकाइट्री में मेलिंगरिंग लेबलाइजेशन कर देती है और हमारी साइकाइट्रिक मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. मैंने 2-3 जगह पे जो पढ़ा मुझे ये रैशनल मिला और समझ आई, और आई एग्री विद दैट कि हमें मेलिंगरिंग का लफ्ज साइकाइट्री से निकाल देना चाहिए, अनलेस और अनटिल प्रूवन अदरवाइज. अगर कुछ भी नहीं हो सकता फिर शायद आप मेलिंगरिंग को कंसिडर कर लें. लेकिन क्या 1192 डिसऑर्डर्स खत्म हो गए तो फिर मेलिंगरिंग लेबल की? 1192 डिसऑर्डर्स को रूल आउट करते हुए शायद आपको टाइम लगे, और जब आपको टाइम लगे और आप लेबल कर लें फिर आप बेशक मेलिंगरिंग बोल दें, वरना ना बोलें. सो साइकाइट्री में मेलिंगरिंग का लफ्ज मत बोलें. जिशान ने हाथ खड़ा किया था. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन. Sir, I have one more question as well. गो अहेड. जिशान से पूछ लूं या आप ही जी पूछेंगे? जी श्योर सर, श्योर. डॉक्टर जिशान आप जीशान पूछेंगे या डॉक्टर मानूर चलें? ओके जिशान. सर
म्यूट पे हैं, आप पूछिए। Dr. Zishan is, by the way, from Services Hospital. He is a first year resident. इन्होंने recently joined किया. गुड अच्छा. गुड जी अच्छा हाँ। सर, मेरा क्वेश्चन है, प्लीज इन easy terms can you explain what is the difference between factitious disorder and a dissociative disorder? मतलब ये एक बड़ी common इसकी discussion स्लाइड होती है. है आगे, Okay, okay, कन्वर्जन और right. डिसोसिएशन का फर्क, वो No, स्लाइड आगे है। sir, factitious and dissociative. मैं वो भी आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। Common manifestations of conversion disorders. Now these are common ones. जो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताए थे 21-22, उनके अलावा ज्यादा कॉमन क्या है? एफेजिया, एफोनिया, एटेक्सिया, ब्लाइंडनेस, कॉग्निटिव सिम्टम्स, कोमा, deafness, dysphoria, tremor, non-epileptic seizures, nystagmus, paralysis, paresthesia, syncope, weakness. These are some of the common presentations of conversion. Now, what is the difference between, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा मैं स्लाइड में, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन अगर ना दूं तो मुझे याद कराना। डिसोसिएटिव वर्सेस कन्वर्जन, दोनों में फर्क क्या है? जैसे कि लफ्ज एक्सप्लेन कर रहा है, डिसोसिएशन का मतलब है डिसोसिएशन फ्रॉम द रियलिटी। आप डिसोसिएट कर लेते हैं, अपने आप को काट देते हैं, सेपरेट कर देते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी मेमोरी से, अपनी कॉन्शियसनेस से और अपनी आइडेंटिटी से। इसीलिए वो डिसोसिएटिव की क्लासिफिकेशन में यही 4 चीजें आती हैं। सो थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस एंड आइडेंटिटी, इफ यू डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम एक्चुअल रियलिटी and go to some other state, this is dissociation. Conversion is the transfer of the symptoms. The psychological distress is transferred into a physical form, causes physical symptoms like that mimic neurological condition. So जब आप अपनी psychological distress को convert कर देते हैं अब फिजिकल सिम्टम्स में, उसका इजहार फिजिकल सिम्टम्स के तौर पे आना शुरू हो जाए, ये कन्वर्जन है। और डिसोसिएशन, जब मैं अपने थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस के साथ कट जाऊं और किसी और दुनिया में चला जाऊं, वो डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन और कन्वर्जन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो हम उस डिटेल में जो क्लासिफिकेशन में है, अगर उसमें सपोजली एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है एफोनिया के साथ, तो मैं उसको डिसोसिएटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विद स्पीच प्रॉब्लम के साथ लेबल करूंगा, लेकिन अगर मैं कन्वर्जन भी बोलूंगा तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट होके शायद फिजिकल सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर रहा है। सो इनमें फर्क नहीं है, मोस्टली इंटरचेंजेबल, राइट। अब सॉरी, वो जो आपका सवाल था उसके ऊपर मैं आता हूं, थोड़ा सा और कवर कर लूं कन्वर्जन के बारे में, फिर बताता हूं। डूज एंड डोंट्स ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहली चीज जो हम आमतौर पे गलती करते हैं, 1, डू ओपनली एक्सप्रेस इंटरेस्ट, वार्मथ, एम्पैथी, एस्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप। डोंट यूज एन अथॉरिटेरियन स्टांस, डिसमिस रियलिटी, ये हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं होता। इस किस्म की स्टेटमेंट्स आर लीथल फॉर द पेशेंट्स आउटकम एंड प्रोग्नोसिस। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ज्यादा क्रॉनिक फॉर्म में हमें मिलते हैं, पक्के मिलते हैं, जो मुश्किल से टूटते हैं, उनके डिफेंसेस ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली किसी ने उनको ये स्टेटमेंट दी होती है कहीं ना कहीं, ओ नहीं नहीं ये जो हो रहा है ना, ये इसको जो है ना वो पैरालिसिस नहीं है, इसको स्ट्रोक नहीं है, इसको नहीं है। वो जो ना की स्टेटमेंट उसके दिमाग में डाल दी जाती है, उससे उसके डिफेंसेस और मजबूत हो जाते हैं। रिमेन इंटरेस्टेड इन डिस्कशन अबाउट the symptom without either excessive attention to or avoidance to. So when somebody is presenting कि मेरा ये बाजू काम नहीं कर रहा, ये उठता नहीं है, ये हिलता नहीं है, आपने इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि इसको भी देखते हैं, मुझे अंदाजा है कि आपका बाजू काम नहीं कर रहा, लेकिन पहले कुछ बातें मैं और भी पूछ लूं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कब से हुआ। So start asking the details, not focusing specifically on this, but taking the background of all of it. Then maintain awareness of development of transference. Now, my professor
माय प्रोफेसर, माय टीचर, ऑब्वियसली ये 30 ईयर्स पुरानी बात है, चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन वो एक स्टेटमेंट बहुत बोला करते थे मुबशर साहब कि ट्रांसफरेंस टू साइकियाट्री इज व्हाट एनेस्थीसिया टू सर्जरी। और ये जुमला शायद मैंने पहले भी कई दफा बोला होगा कि हम अपने मरीज के साथ, अब ट्रांसफरेंस अगर फ्रॉइड की स्टेटमेंट के तहत लें तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ट्रांसफरेंस, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, उस तरह से चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ट्रांसफरेंस को थेरेप्यूटिक सेंस में लें तो ट्रांसफरेंस टू साइकियाट्री इज व्हाट एनेस्थीसिया टू सर्जरी। अगर पेशेंट का एतमाद आपके ऊपर स्टैब्लिश नहीं होगा तो पेशेंट आगे नहीं चलेगा। यहां पे ट्रांसफरेंस फ्रॉइड वाली ट्रांसफरेंस नहीं है, यहां पे ट्रांसफरेंस एम्पथी है, जो 30 सालों में शायद अल्फाज चेंज हो गए। जो वो कहा करते थे वो भी सच था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी बैकग्राउंड वो नहीं है जो आप लोग आमतौर पे समझते कि नहीं। ये वो ट्रांसफरेंस है जो एक डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में एतमाद का जो बिलीफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, ये उस ट्रांसफरेंस की बात हो रही है। Assist patient in rewriting the narrative and, if possible, interpret meanings of physical symptoms. This is also very important. So, don't discount the importance of attachment problems. Make sure that you understand those attachment issues. View the physical symptom as psychological, meaningless, unimportant, or as malingering is not therapeutic at all. Don't do that. So, उसको एसोसिएट कर देना कि तुम्हें बाजू में दर्द हो रही है इसलिए कि तुम जहनी तौर पे बीमार हो। It will be a chaos in the management of dissociation and conversion. So don't do that. अब मैं कुछ ऐसे साइंस आपको बताऊंगा जो मे भी आप लोगों ने सुने हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, मैं देखूंगा। आप लोगों ने कभी कन्वर्जन डिसऑर्डर में के पेशेंट में हूवर्स साइन का सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट? एहसन नवीद साहब, जिशान ने खड़ा किया, अंबर ताहिर लारे, गुड. So you people have heard about it. Now this Hoover sign is a simple test, has its basis on the fact that patients extend their hip when our contralateral hip flexes against resistance. So अगर वो चल नहीं सकता और मैं उसके हिप के ऊपर प्रेशर रखूंगा एक तरफ, तो वो दूसरी तरफ के हिप को ऊपर की तरफ उठा लेगा, मींस के उसको एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये हूवर्स साइन कहलाती है। जब्त का अहद भी है शौक का पैमाना, अहद पैमा से गुजर जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून इतना कि मर जाने को जी चाहता है। को कॉन्ट्रैक्शन साइन, ये कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाएं। को कॉन्ट्रैक्शन साइन, एनीबडी? ओके, मानूर ने सुना हुआ, गुड. Co-contraction is the contraction of an antagonist muscle, such as the triceps, when the agonist muscle contracts, such as the agonist-antagonist muscle group, to detect the absence of true weakness. So, अगर आप इधर प्रेशर लगाएंगे तो बाइसेप्स पे, तो जो उसके पिछले वाले मसल्स हैं वो सख्त हो जाएंगे. दिस इज को कॉन्ट्रैक्शन साइन, और कन्वर्जन में ये साइन प्रेजेंट होगा. Arm drop sign. In this test, the examiner holds the patient's outstretched arm in front of them, then releases it. Jerks or slow descent of the arm onto the patient's lap is typical functional weakness. So, ऐसे करेंगे और फिर वो नीचे रख लेगा. ठीक है? Arm drop test. Sternocleidomastoid test. Patients with conversion disorder will often exhibit weakness when asked to rotate, their head towards the affected side, whereas the patients with organic disease will not. किस तरफ जो है वो paralysis है? वो इस तरफ, right? So they can tilt their head. And sternocleidomastoid test. ये कुछ टेस्ट इसलिए बता रहा हूं कि ये यूजुअली आमतौर पे शायद कहीं और कवर नहीं होते. Collapsing weakness. This phenomena can be elicited by asking a patient to hold one of their limbs
in a specific position. The examiner then applies light force to the limb and it appears to collapse suddenly. Right? This is collapsing weakness. Abnormal movement. Several psychogenic movement disorders are common in conversion, as listed below. Again, मैंने पहले भी बताई. Features typical of all psychogenic movement disorders include rapid onset, improvement with distraction, and variability in frequency. As with paralysis and weakness, it is essential to carefully observe the patient in several settings to pick up these indicators. Now, this is called abnormal movement sign. Tremors, we know about the tremors. Functional tremors are often present at the rest, and with action, they usually fluctuate in frequency. Organic tremors are present either with the rest or action and have a rhythmic consistency. Functional tremors tend to be abrupt in onset, whereas organic tremors are more gradual in nature. Then gait disorders. We all know that there is definite gait disturbances when the conversion disorder patients are trying to walk. उसको एस्टेजिया अबेजिया मैंने फिनोमेनोलॉजी में शायद पढ़ाया था जिसमें उसकी गेट डिस्टर्बेंस थी, उसको जरूर देखें. डिस्टोनिया, again not consistent. It's usually fluctuates, it's variable, the tightness is variable, and usually sometimes it is elicited and sometimes you are not able to elicit dystonia. These are variability of the picture in the conversion patient. Myoclonus, they say that both of the arms or the legs have a jerky movement. When you try to see that, it's usually unilateral. Anesthesia or sensory loss, they perceive that there is no sensation, but when you do the sensory examination, it is positive sometimes. And special sensory symptom, जो आपने देखा ही नहीं होगा. Mirror test. Now this is interesting. This test involves holding a mirror in front of the patient with their eyes open. The examiner moves the mirror from side to side and the test is positive if the patient tracks themselves in the mirror, indicating that they are not truly blind. So patient who is not able to see, of course, that mirror test proves that it's a conversion blindness. So you put the शीशा दिखाया और उसके बाद उसको कहा कि इसमें अपने आप को देखें, अपने चेहरे को देखें, अपनी आंखों को देखें, अपनी नाक को देखें, और उसी दौरान आपने उसको डिस्ट्रैक्ट करके शीशा हिलाना शुरू कर दिया तो पेशेंट भी साथ साथ हिलना शुरू हो जाएगा शीशे को फॉलो करते हुए, क्योंकि वो देखना चाहता है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं. Dissociative blindness or conversion blindness में ये symptom. Fingertip test. In this test, the patient is asked to bring tips of their index fingers together. Tips of the index fingers together. Patients with conversion disorder usually exhibits difficulty with this task, whereas truly blind patients use proprioception to complete the test appropriately. Signature test. This simple test involves asking the patient to write their signatures on a piece of paper. Patients with conversion disorder will often be unable to complete this test, but truly blind patients can write their signatures without difficulty. Optokinetic test. This test involves placing a large rotating drum, which has black and white vertical stripes on it, in front of the patient's eyes. If one observes optokinetic nystagmus, this indicates that the patient brains can detect the stripes. Menace reflex. The menace reflex is tested by presenting a threat to a patient's vision, and then you just try to ignore it, startled. Tearing reflex. The tearing reflex is tested by placing a strong light in front of the patient's eyes. If their vision is intact, as the case with the conversion disorder, the patient will start to tear up. Swallowing symptoms. Patients with swallowing symptoms typically describe the sensation of a lump or tightness in their throats. इसको हम पिछले ज़माने में globus hystericus भी बोलते थे, शायद अभी भी वही बोलते हैं, globus hystericus. Now this globus sensation or globus pharyngeus is called, this functional esophageal disorder has no apparent physiological cause, including underlying structural abnormality, gastroesophageal reflux disease,
or motility disorders. So first I have to rule out the organic problem. It is also seen in patients without conversion disorders, though they often have a comorbid psychiatric condition. Other features are global pharyngitis, include occurrence in between meals and absence of odinophagia and dysphagia. Speech symptoms, several symptoms, speech is impaired, especially in conversion disorder. We all know hoarseness, whispering, and these are some of the presentation of functional dysphonia. But stuttering, foreign accent syndrome, and mutism are also significantly seen. The examiner can ask patients with symptoms of functional dysphonia to cough or sing during lung examination. Often they will be able to perform these functions where the patient with true dysphonia have difficulty doing so. The inspection of the vocal cords will be normal. Now, this were some of the signs that I think were relevant to this presentation. Coming to the main task, the management. As I mentioned earlier, some of the neurological disorders needs to be ruled out before you are making a confirmed diagnosis of conversion or dissociation. Don't miss that, right? Don't miss that. Multiple sclerosis, epilepsy, stroke, spinal disorders, movement disorders, these should be ruled out with conversion disorders as part of the organic problem. Treatment and management, the key to today's presentation. As I mentioned to you earlier, that when I was doing my residency, my training back in 90s, I still remember that the most, again, implemented treatment was pain therapy. And the pain was given through a cerebral stimulation. एक बिजली का झटका जो कि फिट भी इंड्यूस ना करे और उसको पेन भी हो. That was actually very much common at that time as a treatment of conversion. But of course, it was a bad way to treat. We don't want to use aversive treatment. And when the things changed and I was told not to do it, it was very difficult for me to accept it because उससे वो जो पीर फकीर हमारे झाड़ू झंकार मार कूट करते हैं उससे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा सिम्टम्स आते हैं कुछ महीनों के बाद और उन सिम्टम्स में चेंजेस भी आती हैं, वो मजीद स्टबन, रिजिड और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. कहते हैं ना कि अर्लियर द डायग्नोसिस द बेटर इज द ट्रीटमेंट, एंड सेम गोज हियर. इफ यू मिस द फर्स्ट अप्रोच विद द पेशेंट, इफ डोज एंड डोंट्स जो मैंने आपको बताया उसमें से आपने कोई गलत स्टेटमेंट यूज कर ली, पेशेंट्स बहुत सियाने हैं, वो उसको फौरन से पहले पिक कर लेंगे और उनमें बड़ी क्रॉनिसिटी आ जाएगी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू देन क्रैक देम. सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. The first step in the treatment of conversion disorder is involves an effective presentation of the diagnosis to the patient. अभी जब मैं पाकिस्तान में कराची में प्रेजेंटेशन कर रहा था तो मैंने एक लफ्ज बार बार बोला था, we have to make the invisible visible if you want to be a good psychiatrist. जो नजर नहीं आता उसको नजर दिखाना शुरू कर दें सॉलिड फॉर्म में तो आप कामयाब साइकियाट्रिस्ट हैं. क्योंकि हम सिर्फ हवाई बातें करते हैं, एंजाइटी, दिल की धड़कन तेज हो रही है, घबराहट हो रही है, खौफ महसूस हो रहा है, सब हवाई बातें, नजर नहीं आती. लेकिन मैं अगर पेशेंट को साबित कर दूं कि ये सिम्टम आपकी इस टेस्ट की एबनॉर्मेलिटी की वजह से मैं बता रहा हूं, इनविजिबल को विजिबल कर दूं, एक्सेप्टेंस आ जाएगी और ट्रीटमेंट अच्छी और आसान हो जाएगी. मेकिंग इनविजिबल विजिबल. यस, दिस इज व्हाट यू हैव रिटन. यस. अच्छा, मैंने लाहौर में भी ये कहा था. ओके, सो दिस इज द की that we have to make an effective presentation of the diagnosis of the patient. उसको ये नहीं कहना कि तुम्हें conversion है, उसको explain करना है, उसको general recommendations देनी है, that the clinician does not reveal the diagnosis during the first encounter. Instead, it is essential to build a strong therapeutic alliance with the patient. So, पहली चीज effective presentation हो, दूसरी चीज
पहली दफ़ा में डायग्नोसिस मत बताएं, बल्कि उसके साथ थेराप्यूटिक अलायंस बिल्डअप करें और फिर वक्त आने पे उसको डायग्नोसिस दें. Clinician should ask the patient what they feel is wrong with them and encourage discussion of their feelings regarding their symptoms. क्यों हुए ये अलामतें, कैसे हुई, किस जगह पे हुई, उस वक्त क्या कर रहे थे, घर में कौन कौन था, आसपास कौन कौन था, घर का माहौल कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है, बाकी चीज़ें कैसी हैं. सो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आप बोलेंगे तो चीज़ें आप रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. Then focus on the fact that the patient's symptoms are real and that you understand the effects of these symptoms of the patient. Then do not tell the patient that there is nothing wrong with them or that this is not just psychological based illness. जहां आपने ये लफ्ज यूज कर दिया ना कि ये आपकी जहनी बीमारी की वजह से ये अलामतें हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, पेशेंट की एक्सेप्टेंस चली जाएगी और आपका थेरेप्यूटिक अलायंस और आउटकम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. दिस इज अनफॉर्चुनेटली दैट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम. एंड again, as I said, one wrong statement can lead to chronicity. Give the patient examples of organic diseases that can be induced or worsened by stress, such as irritable bowel syndrome, peptic ulcer disease. Also provide examples of other common physical manifestations of underlying stress and psychological illnesses, such as sweating, shaking, palpitation during an episode of acute anxiety. कैसे होता है, वेजोवेगल रिफ्लेक्स कैसे होता है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, किन किन जगहों पे वो इफेक्ट करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स वो लेके आ सकते हैं, सिंपैथेटिक सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक क्या हो सकते हैं. साइकोलॉजिकल के बारे में डायरेक्ट बात ना करें तो बेहतर है. Explain how the diagnosis was made and point out the differences in physical exam history that help you differentiate between organic, neurological disease and conversion disorder. But this comes very late, not in the beginning. Once the patient starts improving, getting better, then this is the step that you have to take. Explain that their symptoms are potentially reversible because although they are not functioning properly, there is underlying structural damage. There is no underlying structural damage. So prognosis अच्छा है, आउटकम अच्छा है, हमने स्कैन करा लिया, हमने दिमाग का टेस्ट देख लिया और हमें पता चला कि अंदर से दिमाग में एज सच कोई बहुत बड़े मसाइल नहीं हैं, लेकिन जाहिर obviously, and then so and so forth. Emphasize on the fact that understanding and accepting the diagnosis of conversion is essential for proper treatment as it allows the patient to fully engage in treatment instead of focusing on figuring out what is wrong. Reach out to any other provider that the patient has to ensure that there is a cohesive approach in the presentation and treatment of disorders. So this is very important strategy जो अभी तक मैंने बताई. मोहब्बत के घरों के कच्चेपन को ये कहाँ समझें. कन्वर्जन के इमोशनल सिम्टम्स को के बारे में बात करते हुए बात करूं. मोहब्बत के घरों के कच्चेपन को ये कहाँ समझें. इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना और फिर वो बड़ी होती चली जाती हैं. Mainstay of the treatment is CBT with physical therapy. But if you go through the article that I wrote, comorbidities in conversion and dissociative disorders, anxiety and depression in conversion disorders, something इस तरह का कोई टाइटल था, 20 साल पुराना है, CPSPP वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो आप उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी जो कि हकीकतन बहुत सारे और लिटरेचर में भी प्रूव होती है, सिर्फ मेरा आर्टिकल ये नहीं कह रहा, कि कन्वर्जन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में कोमॉर्बिडिटी इज वेरी हाई. 80% of the people are probably having anxiety or depressive disorders or symptoms of anxiety and depressive disorder. So at this part, if you feel that there are PTSD associated symptoms with conversion or dissociative, or GAD, or OCD, or MDD, then treating comorbidity can improve the prognosis and outcome. Transmagnetic stimulation. Well,
I don't know how much it helps because the literature is still too short to give me a very good, precise answer to it. Because the kind of the problem which is there आजकल पाकिस्तान में और इर्द गिर्द जहाँ पे भी ये है, जिन इलाकों में ये ज़्यादा होता है कन्वर्जन, वहाँ पे शायद TMS इतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता, और अगर इस्तेमाल होता है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. I remember the last time I asked the cost of the TMS in Pakistan, it was probably 2.5 lakh for 2 महीने या 3 महीने के treatment, which was still a big amount, not a small amount. So prognosis, factors that promote a good prognosis include: 1, sudden onset, early diagnosis, short duration of symptoms, lack of comorbid disorders, especially personality and identifiable stresses, and positive patient-clinician relationship, patients with greater number of physical symptoms of poor physical functioning before diagnosis have increased chance of poor outcome. कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं इतना याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे. कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा न पाओगे. कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर शय में पाओगे. कहीं पर भी रहे हम और तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे. वो स्लाइड मिस हो गई जो डॉक्टर साहब ने पूछी थी, सो वो उधार रही. I will just try to cover up that slide sometime sooner again. Right now, any questions? सर मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है. जरूर. कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन का नहीं है, वो वो स्पेसिफिकली पोजेशन ट्रांस डिसऑर्डर को लेके है. एक्चुअली हमारे वार्ड में एक दिन एक रेजिडेंट केस कॉन्फ्रेंस कर रही थी लाइव. तो जो पेशेंट थी जो उनको अलॉट हुई थी वो थी पोजेशन ट्रांस डिसऑर्डर. तो जब उन्होंने उनका इंटरव्यू करना शुरू किया पेशेंट का, तो दरम्यान में जो पेशेंट है वो पोजेशन ट्रांस वाली स्टेट में चली गई, और उन्होंने ऑब्वियसली उनकी वो एक मेल वॉइस हो गई और वो उस तरह बात करने लग गई. जब हमारे पास एग्जाम सिचुएशन में ऐसा हो, पेशेंट इस तरह हो जाए बीच में, तो इसमें हमारा प्राइमरी टारगेट क्या होता है? हमें ऐसा एक तो एक दफा नहीं, कई दफा एग्जाम में हुआ है और मेरे सामने की हाउ डू बात वी है. टैकल दिस सिचुएशन? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ. उस वक्त मतलब जब पहली दफा ये हुआ, आई स्टिल रिमेम्बर इस्लामाबाद में एग्जाम हो रहा था और आई वॉज द एग्जामिनर. वन ऑफ द एग्जामिनर वॉज मार्किंग द कैंडिडेट, और वो कैंडिडेट का जो पेशेंट था उसने उससे बात करनी शुरू ही की, शायद 2 या 4 मिनट ही होंगे, तो उसको फिट पड़ गया और वो पेशेंट जो है वो जमीन पे गिर गई और वो खामोश हो गई और वो जैसे होता है वो हो गया. Now the focus was, it was a long case, right? I was supposed to assess her, how she was taking the history, mental state examination, making a diagnosis, blah, blah, blah. The way the candidate handled the patient was miraculously nice. She absolutely never panicked. She kept on standing there, listening, talking, communicating, asking, वगैरह वगैरह. And she did amazingly well. For 40 minutes or so, the patient was there and the candidate was there, and whole of the history and the mental state and physical examination was disastrous. But even then, the candidate passed. So the way you have to handle, हमें क्या करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हम करते हैं एक्चुअल क्लिनिकल सेटिंग में. पैनिक किए बगैर पेशेंट से बात करनी है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है, रीएश्योर करना है, एम्पैथी का इजहार करना है, हेल्प मंगवानी है, फीमेल अटेंडेंट्स मंगवानी है, कोई रिलेटिव्स है उसको बुलाना है, उसको उठाना है, बिठाना है, पानी ऑफर करना है, बातचीत दोबारा शुरू करनी है. दैट इज द वे. अगर वो पेशेंट आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जो कि मैटर करती हैं, ऑफ कोर्स यू नो, विद इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन, और ये सारी प्रेजेंटेशन का थीम वही था, अगर आप इसको दोबारा सुनेंगी तो, अगर आप ये सारी चीजें कर लें, ठीक है, हिस्ट्री रह गई, मेंटल स्टेट रह गया, फिजिकल एग्जामिनेशन रह गया, तब भी आप पास हो सकते हैं. द वे यू हैंडल इट,
कन्वर्जन के पेशेंट को मैंने कहा हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है रैपो बिल्डिंग, establish empathy, try to make invisible the visible, start making sure that the patient starts communicating, expressing therapeutic relationship, and things start moving forward. If that happens, you are a successful psychiatrist. If that won't happen, you're a failure. So कुछ नहीं होगा. I hope मैंने जवाब दिया तुम्हारी बात. Yes sir, you did. हमारे जी लारे. प्रैक्टिस है कि पेशेंट्स जो होते हैं कन्वर्जन के साथ आते हैं, हमारे फर्स्ट काम ये होता है कि हम उनके पास से उनके अटेंडेंस को हटा दें, बिकॉज वो यूजुअली एक फौज के साथ आ रहे होते हैं, एंड वी लेट देम सिट अलोन एंड stew in their entire thing and then we go talk to them. So is that the right approach? नहीं समझ आई. फिर पहला वाला जुमला दोबारा बताएं, पूछें. जब भी हमारे वार्ड में यूजुअली इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, हम उनकी जो अटेंडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी फौज के साथ आ रहे होते हैं, उन सबको हटा देते हैं और उस बंदे को अकेले बिठा देते हैं कमरे में कि भाई आप बैठे थोड़ी देर के लिए, हम आते हैं. And then we let them stew in whatever they're doing. Usually वो उस वक्त कोई फिर थ्रो कर रहे होते हैं, and by the time they calm down a bit and then we go and then we like start counseling them. So is that the right approach? Again, if you feel that this approach is practical, because you are not doing any intervention as such, you are just making the patient wait in the waiting area all by herself, right, or himself, right, herself mostly. So, and you feel that it could be therapeutic, I don't mind that. Developing a therapeutic alliance and making the patient sit alone for some time, not without a reason, but with a reason, that you have sent all the family members outside, left the patient alone in a room. She developed a fit, she fell down or was unconscious for a time, and then you decided to enter into the room, say after 5 minutes, 10 minutes, or whatever time you have decided to start again building a relationship. Well, fine, I don't mind that if you have that much time and if you can spare it, and if you feel that it will be a good strategy, yes, if it can work, why not? It all depends. In some situations, the way you are saying it to me, if you have sent all the family members out, which is good, I do the same. I make sure that everybody is out from the room. There is nobody in the room except me and my patient, or of course, one chaperone with me, like a nurse or a female doctor or somebody. Of course, this is very, very essential. So somebody should be there accompanying me. I have to be careful about that, especially in these type of people. And if I feel that leaving the patient, आप यहाँ 2 मिनट बैठे, मैं आ रहा हूँ. So बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट आपके सामने आके बैठी है, पेशेंट के सारे रिलेटिव्स को आपने बाहर निकाला है और वो गिर गई, बेहोश हो गई. अब अगर उस स्टेज पे मैं उसको छोड़ के चला जाता हूँ कि आप थोड़ी देर बैठो, मैं आ रहा हूँ, आपके ख्याल में ये थेराप्यूटिक अलायंस जो है स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखो कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, डॉक्टर के सामने मैं बेहोश हो गया हूँ और डॉक्टर मुझे छोड़ के बाहर चली गई कमरे से, क्या ये इफेक्टिव होगी कि इनइफेक्टिव होगी? आई थिंक इट विल बी इनइफेक्टिव, बिकॉज ये रेजिस्टेंस को एनहांस कर देगी. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई है कि पेशेंट आपके पास आके बैठी है, सारे रिलेटिव्स को आपने बाहर बिठा दिया, आपने उससे बातचीत करनी शुरू की और पेशेंट आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और एक थेराप्यूटिक अलायंस स्टैब्लिश हो रहा है और आपको ये परसीव हो रहा है कि अब इसको सीजर हो जाएगा, तो ब्रेक देने के लिए आप बाहर चले जाते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं उसको दौरा पड़ा हुआ और फिर आप उसको संभालते हैं, तो मे बी इट कैन वर्क, मे बी. It all depends on your efficiency of developing a therapeutic alliance. जैसे मैंने बार बार इसमें फोकस किया, कन्वर्जन डिसोसिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप मरीज से इनिशियल इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं. अगर वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तो आपका मरीज ठीक होगा, आपका थेरेप्यूटिक अलायंस स्टैब्लिश होगा, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी और मरीज अपने आप को ओपन अप करेगा. लेकिन अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज आ गया तो फंस गए, और फंस गए तो क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक हो गया तो मुसीबत हो गई. सो बी केयरफुल
I always suggest a very standard methodology of doing things. अपना एक टेबल खुद डिमार्केट कर लें कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे. That is the best way to move forward. Amber, you want to ask a question? Go ahead. Amber Tahir? Or there was another guest user who wanted to ask the questions. Two raised hand. So anybody who wants to ask a question, go ahead. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर बस आपको देख के बहुत मोटिवेशन होती है, इतना कहना था. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. Ehsan, you are in Islamabad these days, right? Sir, I'm in my 4th year training. It has just started, but IMM is on head. I couldn't do well in the last exam, so we are preparing hard this time, sir. Good, good, good. बस लगे रहो. FCPS भी अब होने वाला है, अब तो टाइम खत्म होने वाला है, right? Just go ahead, don't worry about it. Right? Okay. Any other question? Anybody? Not for now. Not for now. Not for sir, now. लेकिन Okay. I am maybe बाद में. absolutely fine. Okay. Sorry. Distraction. So if there are no